A very good afternoon to all of you present here. Hope you had lunch. I, Shivani welcome all of you to the afternoon session of today's training schedule. The first lecture we have is on quality spawn production techniques on mushroom cultivation. It is to be delivered by Dr. Tanveer, Associate Professor, Division of Plant Pathology at Faculty of Horticulture, Shalimar, SKUAST-KASHMIR. Dr. Najeeb is associated with Mushroom Research and Training Center from his early career. He is also involved in the establishment of MSME at Faculty of Agriculture, Wadura in 2018. He has made that 73 national and international publications to his credit. Also, he has authored 2 books on multiple mushroom cultivation, which are released by SKUAST-KASHMIR, Shalimar. Currently, he is guiding 3 masters and 2 PhD students. So I request you to present the lecture. Professor Dr.Tanveer, Hydrogen Technology, Dr. Wani, and Dr.Tanveer, and dear students, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. At the outset, I would like to thank the organizer of this training program, especially Dr. Wani, for giving me the opportunity to interact with you all, and for giving me the opportunity to share my little experience with you. Today, I have also delivered a lecture on the quality mushroom spawn production technology. As we see, mushroom is an emerging agricultural enterprise, not only in the world but in India and in Jammu Kashmir also. Many young fellows, whether educated or uneducated, they are getting involved in this activity because of the high returns obviously. For this mushroom to be successful, there are certain requirements, and first and foremost is the quality spawn. The spawn is actually the seed of the mushroom. Like we have in agricultural crops, wheat and rice, we have seeds which are produced by the plants and which we use to propagate the crop. In case of butter mushrooms, we have spawn. In case of all the mushrooms, we have spawn. Under native conditions, the mushrooms multiply by means of spores, which are produced in their gills, and they are taken out by the air currents and spread to distant areas, and then the mushroom continue to nature. But when we try to cultivate mushroom inside at our own disposal, at our own time, we need spawn. This spawn is actually the substrate of mushroom fungus, which is covered by mycelium of the fungus. So, before deliberating on the lecture, I will give you outline on the lecture. First, the introduction, infrastructure required for spawn production, method culture preparation of spawn, commercial spawn production, and methods of spawning and precautions in the spawn production you need to take care of so that you can produce quality spawn. As I told you, like agricultural crops or horticultural crops, we need the proper fuel to produce the crop. Similarly, in butter mushroom, we need spawn to multiply, to propagate, to cultivate the mushrooms. This propagating unit consists of the substrate plus the fungus of the mushroom, which is fully colonized by the mushroom fungus. And then when it is fully colonized, we call it spawn.
a little bit of the history. Before, as you see naturally, in the history, there was no spawn production. People used to gather mushrooms from the forests, from the pastures. But as the time evolved, mushroom became a business. We need to produce the spawn. Up to, it was first scholar in 1692 who described spawn as mycelium of mushroom. And up to 1894, spawn was gathered from the wild. It was not as a business. It was gathered and then sold, but it was not produced by humans as a business entity. And before this gain spawn, which is today universally known as the best spawn of mushroom, what I already told you, the wheat grain spawn of the wheat grain that is considered one of the best spawns. Before it was started, there were other spawns that were used, and among them was flake spawn, which consists of bread on which the mycelium of the fungus was grown, and then this flake was used to as inoculants for the compost. Then there was another spawn, mill spawn, where they prepare the pigs of the horse dung or cow dung and the loam soil. That was inoculated by mycelium culture, and then that was used as spawns. Later, at the time evolved, then manure spawn was used. This was first spawn that was sliced horse dung or compost that was inoculated with the mycelium of fungus. The first pure culture spawn was produced by Constantine in France in 1894, and Duber in 1905 prepared pure culture mushroom spawn, which was later used to inoculate the bottles. The first grain spawn was produced by Pennsylvania State University in 1932. So, before venturing into the spawn business, before venturing in the preparation of spawn, it is important to know what are the infrastructure and different requirements for spawn production. This is the picture of layout of the building, which we call as a spawn unit, spawn producing unit. It is not necessary that when you start the business, you will have to learn all these structures. Initially, you can start in one single room, which will be should have the laminar airflow, the autoclave, and the storage room. But when you are doing commercially, if you want to establish the spawn room, spawn production unit, then you will have to have these components of the spawn producing unit. Here you can see this is the entry, then there is the lab. When you enter into this lab, before that you have changed your clothes in this changing room. Then you enter the lab. In the lab you have a store where you have this requirements for various requirements for spawn production. Then there is boiler room, and then in the lab you dry these grains on the table, lab table. Then you have autoclave room where you autoclave slices the spawn. And autoclave you will find here the inoculation room. This one is the inoculation room, where you inoculate the sterilized bottles with the mycelium of the fungus. And after inoculation, you incubate these in the incubation rooms. This is just an outline, but you can always modify it as per your availability of the place. Then there are minimum number of equipments that can be used. It does not involve very high cost, but still up to 5 lakhs, within 5 lakhs you can establish a small producing unit. This one is the utensil used to boil the grains. This is the autoclave, horizontal autoclave. This is the laminar airflow, and this is the FoA incubator. I think all of you are aware. We have just seen in the practical and we have seen all these equipments. Then I told you in general fungus, the property material comprises of mycelium as well as spores, and in case of similar cold stool, in case of the buttermilk mushroom. In case of general fungi, we have asexual spores and sexual spores, but here in case of the buttermilk mushroom, we generally reproduce it by vegetative means, by mycelium bits, or we can have the sexual spore, that is the best asexual spore.
But commercial mushroom is always prepared from the mycelium bits or tissue bit culture method. Then for raising the pivot culture, we require tissue culture. We get the tissue from the collar region of the button mushroom. Collar region is the region where the stalk and the cap combines. There is a thin boundary which we call collar region. We take the tissue from there and then we put in the sterilized media, incubate it, and we get the master culture. And when the master culture is prepared, we use that master culture to prepare master spawn. There are two terms, master culture and master spawn, which I will be clear in the practical, but still, master culture is the culture prepared directly from the fruit body of mushroom, whereas master spawn is the spawn produced from the master culture. The spawn which we produce from the master culture, that becomes the commercial spawn. If we need to purify the culture, we can use it by sub-culturing, which is done regularly. And to grow the this mycelium, this fungal culture, we need the different media. We can use different media. There is a list of media, potato extract, compost, wheat extract, and rice non-decoction medium. We can use any of these mediums and prepare our master spawn. But in general, potato extract is preferred for cultivation of this, for preparation of master spawn. Then this is a demonstration of the tissue bit method for preparation of master spawn. As you can see, this is this picture is the inverted upside down button mushroom. Here you can see the second on the right top. Pointed at. So you can see the second picture where the top of it you can see that from the collar region the tissue bits are taken and then they are inoculated in the pedicellate and then you see the master spawn, master culture in the pedicellate of incubation. Then this is the spore method where we get the spores from the fruit body. Although this fruit body is not agaricus, this is some other mushroom, but the spore method is obtained when you place the fruit body cap of the fruit body on the plant paper overnight, and in the morning you can see the print like this. The disc shape, this one, and this one, they are the spore prints. And then you can use these spores for inoculation and for getting the master spawn, master culture. But there are some mushrooms which are heterothallic, which will not grow from a single spore. They will need another spore and then they will combine and then they will produce the fertile mycelium. But in case of button mushroom, we are lucky enough that even a single spore can produce the pure culture. So these are the methods how to streak and how to make a pure culture. Then the maintenance of the culture. Once you get the master culture, you can use it for preparation of master spawn. But maybe there is a time lag between, so you can preserve this culture ordinarily by keeping it in the refrigerator at 4 degrees centigrade and use it after when you are free and when it is needed. There are other methods of preserving the culture which I will not go into details. This is not the preservation of the culture that might have gone through in the last lecture yesterday. So I will not be deliberating on these methods. Then the spawn production, which is the main activity here. After this needs a substrate, and I told you there are many substrates which can be used for preparation of this spawn. The most preferred one is the wheat grains, and next is the preparation of these substrates for the inoculation. We use the healthy seed grains, we boil them for 10 to 15 minutes, drain the excess water, and then dry these, and then calcium carbonate and gypsum is added, as we have shown in the practical. Then after putting in the bottles and bags, we autoclave it for 121.4 degrees centigrade for 2 hours. And after autoclaving, we inoculate it with the master spawn and we get a master
culture and we get the master spawn after 10 to 12 days. Then, as I told you, this master spawn is regulated from the master culture directly. And when this gets ready after inoculation, this takes 10 to 12 days for completion. And once we get the master spawn, we can use it for the further multiplication for the commercial spawn. This is the general outline how it goes. First the pure culture, then the master culture, then the master spawn, and then commercial spawn. This is in the figure you can see on the right side of this. And this is on the left, on the right side is this. On the left side, you can find all the procedure and the diagrammatic representation of this whole process. Then how do we know that the spawn which we produce is a quality spawn? It should have some characteristics, it should have some quality. First of all, when you are purchasing or when you are getting spawn anywhere, you should ensure that it is of single color. We have white color, spawn which is white color. In case of produce DGM mode, it is pink color. But here the point considered is that the spawn should have one color. If it has more than one color, that means there is some contamination. There is some other things in addition to the spawn which are not referred to as light. So it should have one color, it should be pure. It should be fresh as when the old spawn is used, it will result in less heat. So preferably all the times you should have master spawn and farming repair spawn further and use for the production purpose. Then whatever spawn we are preparing, you should ensure that whatever spawn we are making, it should be of high yielding strength, it should give us high returns. And it should be free from contamination, it should be available at the cheap rates if you are purchasing from the market. Then spawning is a process of mixing the spawn with the compost. The process is known as spawning. There are various methods: top spawning, spot spawning, hollow spawning, and multi-layer spawning. Top spawning we do when our compost is having high moisture. We place the spawn on the top of the bags containing the compost. And the rate of use of spawn is 0.2 to 0.5 to 2%. And in the spot spawning also, we place the spawn at certain spots and then incubate it so that it can colonize the compost. How the spawning is another method where we mix the spawn with the bulk of the compost, which is general mixing. Like we mix the calcium chloride and other gypsum with the grains, similarly with the compost we are mixing the spawn. That is called as a house spawn. But most preferred type is multi-layer spawn, which is characterized especially in most of the places in India. We place layer of compost in a basket, in a bag or in a tray, and then place one layer of spawn. Then cover it again with the compost layer, and then place another layer of spawn. The purpose is that the whole compost should be colonized by the fungus, so that the spawn is proper. When the spawn is proper, the yield is expected to be higher. If the whole compost is colonized, naturally you will get better yield. And then there are precautions, some of the precautions while preparation of the spawn is, as in most of the crops, in all agricultural crops, without any exception, we have the problem of diseases. Similarly, the case with mushrooms. If we don't take care, we don't use cleanliness, we don't use sterile material, we will be having the contamination, we will have the disease. So, cleanliness is most important for maintaining the disease-free spawn. Then we have to follow the proper procedure for during the spawn protection, and we have to sterilize our hand by using various materials like citrate, etc. And we have to sterilize the equipment. Before using a material, we have to switch on the light for 20 minutes, and then after 20 minutes, we have to switch off the UV lights and switch on the tubes and the air so that outside air, outside conditions are not entering the banana flow. Similarly, we have to use disease-free and healthy grains. We have to see that the grains are not overboiled and grains are not underboiled.
always slice the water properly or bags properly for evaluation of time. And while we are preparing this spawn, we have to shake the water 3 to 4 times so that the time taken in the spawn run is less and we get a spawn that has fully colonized the grains. And after the spawn is ready, we have to store it at 4 degrees centigrade. That can be in the lowest level of temperature, which is 4 degrees. Then one of the important things is that we should use always fresh spawn. If that is not possible, we should use maximum 3 to 4 generations, not more than that. That will affect the yield of the mushrooms. Then when we are using the spawn, we have to label the bottle with proper date, time, species and other things so that we can know the age of the spawn. And this is all about the spawn production. I want to finish this short Okay, thank you, Dr. Tanveer. Nicely you presented your lecture. And now, if there is any question. Yes. The participants are invited to questions. Any doubts you can raise and you can make some clarifications at Dr. Tanveer. Okay, thank you very much. No question around. I think you have trained during your practical session. Yes. So that's why we are not able to raise any question. Thank you very much. Thank you so much, sir. We thoroughly Please, Dr. Thank you very much, sir. I would like to request Head Division of Plant Ecology, Professor Ahmad, to present a token of gratitude, Dr. Najeeb. Thank you, sir. It was a very good lecture. We thoroughly love listening to the lecture. For the second lecture, that is preparation of compost of cultivation of water mushroom industry. We also invite you, sir, for the same. So, the topic of this lecture is preparation of compost for cultivation of water mushroom industry. Sperm, that is one of the most important component for successful mushroom production. If you see, compost carries equally the same importance. It can be understood by the example that if you are having good seed
of any crop and we are placing it in the soil which is not fertile, we will not be having any crop, even if the seeds are high quality. Similarly, in case of the mushrooms, even if we have a high quality spawn, but we don't have the good quality of compost, we will not be able to have high yield. At times we will have a very low yield, and if we don't care and we don't manage the compost properly, we will be having no yield at all. So compost has very high importance in the successful production of butter mushrooms. And as you all know that these mushroom, especially butter mushroom, is known as the queen of vegetables and vegetable meat. This queen requires special substitute. Being green, it requires special attention and special substitute to be cultivated. And if you see the world scenario, what are the total mushrooms that are cultivated in the world? More than 40% area, 40% share of butter mushroom. So we have to have good compost for a good yield, and we have to put our efforts to prepare a good compost. And when it is combined with a high quality spawn, it almost ensures high yield from our butter mushroom. These are the butter mushrooms, and the substrate and compost is also prepared here, which is covered by this area. So I have the different steps for cultivation of mushrooms. Besides the preparation of spawn, we have preparation of compost, spawning of compost, casing, harvesting and marketing. So for preparing the substrate, for preparing the compost, we need a process that is called as composting. Why do we need composting? In case of low-resin mushrooms, we simply use the substrate, like wheat straw, like paddy straw, and then we now wash it, soften it with water overnight, and then inoculate the spawn. But here, we need composting. The question arises, why should we go for composting? Why don't we, in nature, does composting occur? This is the general question. And how in nature without composting these mushrooms are grown in the fields, in the forests, etc. So here I would like to clear that in the nature also, there is a natural process of decomposition. Although it takes longer time than the composting we do in our labs, in our units, but mushrooms go only on the decomposed material. So under natural conditions also, we have the decomposition, we have the compost, but the material is lying below the ground and you can see only the protein body. That's why we don't see the compost. But the decaying organic matter is always there. Just a minute, sir. Everybody is understanding English or you are reading Hindi or Urdu? कुछ कैंडिडेट होंगे शायद फेस करेंगे प्रॉब्लम अगर उर्दू में तो अगर थोड़ा उर्दू में भी बोलेंगे तो देखो बटर मशरूम के लिए, बटर मशरूम की पैदावार के लिए जितना इम्पोर्टेंट स्पान है उतना ही जरूरत जो अच्छी कंपोस्ट की है। कंपोस्ट हम उर्दू में खाद को बोलते हैं या कश्मीरी में भी बोलते हैं मशरूम खाद, ठीक है। तो वो खाद बनाने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है जो कंपोस्टिंग है। कंपोस्टिंग से क्या होता है, जो हमारे पास मटीरियल है, सबस्ट्रेट है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डिकम्पोज मतलब सड़ा देते हैं उसको ताकि इसकी लेवल पर हो बटर मशरूम के लिए। और ये जो कंपोस्ट है कंपोस्ट की वजह से एक लाइक मीडिया बन जाता है, इसमें मतलब एक खुराक बन जाती है बटर मशरूम की, जिसको आप खा सकते हैं। जो मशरूम है आपको पता है ये एक फंगस है, जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसा इसका सिस्टम नहीं है। ये एक फंगस है जो अपने जो माइसीनियम होता है इसके अराउंड ये रिलीज करते हैं एंजाइम जो कि डिसॉल्व करके इरिटेट के स्टेज में होते हैं न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करके फिर अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसको ऐसा मीडिया चाहिए जो ये जिससे इसके एंजाइम एक्ट कर पाए। तो यही सब
मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिससे इंटरैक्ट करे, इसलिए इसको हम कंपोस्टिंग करते हैं। इसकी वजह से पेलेटेबल हो जाता है इस फंगस के लिए। और इससे क्या होता है, जो इसकी शक्ल होती है कंपोस्ट, अगर हम सीधे घास पे डालें तो उस पे मशरूम करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो जल्दी बनाने के लिए इसको ऐसी शक्ल बना देता है जिसमें पानी भी होता है, जिसमें हवा भी होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इसलिए हमें कंपोस्टिंग की जरूरत है। कंपोस्टिंग के लिए हमें कुछ सब्सिडी की जरूरत होती है। हम किसकी कंपोस्टिंग करें, किसकी खाद बनाएं, तो उसमें जो हम देखा गया है सबसे अच्छी कंपोस्ट है वीट स्टॉक की होती है। उसके बाद राइस स्प्राउट, ओट्स, चना, अर्ली और पॉपुलर लीव्स। ये जो चिनार और पॉपुलर लीव्स है, इसमें SKUAST-KASHMIR में 2005 से काम किया था। ये देखा गया कि इनके भी अगर हम कंपोस्टिंग करेंगे तो इनमें भी अच्छा क्रॉप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फ्री मटेरियल है। देश में हर जगह पे चीज होते हैं, हम इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉपुलर लीव्स है, उसके बाद हम इनकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जो SKUAST-KASHMIR में डेवलप किया था, जिसको SKT और SKT फार्मूला कहते हैं। ये जो दो फार्मूला है इसलिए है क्योंकि अगर हमारा सब्सिडी वीट है तो हम SKT के फार्मूला में चीजें हैं, ये साथ में वीट के दूसरा है उसका डाल के कंपोस्ट करेंगे। और अगर हमारा सब्सिडी जो है पैडी है तो हम पैडी के साथ ये वाले क्वांटिटी में ये सारे सब्सिडी डाल के कंपोस्ट करेंगे ताकि हमें एक अच्छी चीज मिल सके। तो SKT जिसे हम वीट बेस्ड कंपोस्ट करते हैं, उसमें क्या वीट मेन सब्सिडी होता है वीट का, उसमें हम ले लेते हैं 300 किलोग्राम ऑफ वीट का, 200 किलोग्राम ऑफ chicken manure, rice around 50 kilograms, farm liquor 5 liters from 5 kilograms of maize, and linseed 7 kilograms, urea 5 kilograms, potash 2 kilograms, and gypsum 10 kilograms. इसी तरह अगर हम लेते हैं पैडी का सब्सिडी, मेजर सब्सिडी पर तो फिर हमारे पास ये क्वांटिटी 400 किलोग्राम है, 300 किलोग्राम poultry manure, 50 kilogram rice and farm liquor 5 liters from 5 kilograms of maize, 7 किलोग्राम जो है वो linseed meal और 5 किलोग्राम जो है यूरिया और 2 किलोग्राम पोटैश और 15 किलोग्राम जिप्सम। ये जो फार्मूला बनाया गया था ये तकरीबन 60 बैग्स के लिए बनाया गया। 60 बैग्स जो 15 kg के बैग होते हैं वाली बैग्स, तो वो बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी में इतना मटेरियल हमें चाहिए। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो मशरूम से डेवलप्ड सोलर है, उन्होंने भी अपना कंपोस्टिंग फार्मूला बनाया है, जो वहाँ पे भी मटेरियल है उसके हिसाब से वीट्स का ये लेंगे, अगर लेना है वीट वेस्ट ये 1 टन लेंगे, पैडी का 1250 ग्राम लेंगे, सीड एंड जो फर्टिलाइजर है वो 30 किलोग्राम लेंगे, सुपर फास्फेट जो फास्फोरस प्रोवाइड करता है वो 25 किलोग्राम लेंगे, यूरिया 12 किलोग्राम, यूरिया पोटाश 10 किलोग्राम, वीट ग्राम 100 किलोग्राम, मोलेसिस 16.6 किलोलीटर्स, जिप्सम 100 किलोग्राम एंड फॉलियर डस्ट 750 ग्राम। ये जो फॉलियर डस्ट है ये इंसेक्टिसाइड है ताकि कंपोस्ट में कीड़े पैदा ना हो, तो इसलिए इसको लास्ट टाइम ये मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक बात रह गई, ये जो काम लिखा है इसमें आप क्या करेंगे, जो मेज है, जो मेज ग्रेन्स हैं उनको आप क्रश करेंगे 5 लीटर पानी में, फिर उसको जब आप कंपोस्ट के लिए फाइल बनाएंगे उसको ऐड करेंगे। वहाँ पे भी ये चीज़ ऐड करेंगे, वो आप आगे बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है कि फार्मर ये ग्रेन्स लाएगा उसको क्रश करेगा, तो इसी जगह हम क्या यूज करते हैं मोलेसिस, जिसको हम राब कहते हैं। इसी जगह हम वो यूज करते हैं, वो 15 किलोग्राम पाइल यूज करते हैं। उसके बाद ये IIHR बैंगलोर में जो फार्मूला लगाया है उसमें भी पैडी का 150 किलोग्राम या मेज का 150 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 9 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 9 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, राइस 50 किलोग्राम, कॉटन 50 किलोग्राम, जिप्सम 12 किलोग्राम एंड कैल्शियम कार्बोनेट 10 किलोग्राम। आप देखेंगे कि हर जगह जो कंपोस्टिंग फार्मूला है उसमें वीट कम है, राइस सबसे ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि वीट होता है थोड़ा सुथरा होता है, थोड़ा हार्ड होता है,
वो उसका बल्क रहता है, वो डिकम्पोज भी होता है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है। जो पैडी है वो ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए जो 60 बैग्स बनाने हैं उसके लिए हमें 300 किलोग्राम व्हीट चाहिए था और 400 किलोग्राम पैडी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये कंपोस्टिंग की प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। ये इसके दो तरीके के कारण हैं, जिसका नाम टर्म कंपोस्टिंग कहते हैं और शॉर्ट टर्म कंपोस्टिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म कंपोस्टिंग जो है वो मशीन में लगभग 35 डेज लेती है कंपोस्ट तैयार करने में, स्टार्ट से लेकर एंड तक। और जो शॉर्ट टर्म कंपोस्टिंग है अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली 22 डेज लेते हैं जहां पे इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे हम फेज साइकिल का कंपोस्ट करते हैं। उसमें पर एक चैम्बर होता है जिस पर पाइप उसमें फ्लोर में जिससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और वो सप्लाई करते हैं कंपोस्ट को। तो उससे जो है हमारे 10 से 15 दिन बच जाते हैं। तो वो मशीन में अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी फार्मर के पास, ना ही किसी एजेंसी को, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को या यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन इसका हमने जो स्वास्थ्य है उसका एक जुगाड़ तरीका बनाया है शॉर्ट टर्म का भी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास ये है, चाहे आपके पास व्हीट स्ट्रॉ हो, राइस स्ट्रॉ हो, सबसे पहला काम है उसको चॉप करेंगे, काटेंगे इसलिए क्योंकि काटने से दो फायदे होते हैं। एक तो डिकम्पोज जल्दी हो जाता है और दूसरा इसमें ये होता है कि आप मैन्युअली जब आपको पेयर करना हो, डिकम्पोजिशन में ऐसा नहीं है कि ढेर लगाने की कंपाइल करते हैं और वो सारा जो मटेरियल है डिकम्पोज भी हो जाएगा, नहीं, उसको पेयर करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल एरिया है और जो बेस एरिया है वो ज्यादा डिकम्पोज होता है, टॉप एरिया और साइड जो है वो कम डिकम्पोज होते हैं। तो कोई यूनिफॉर्म डिकम्पोज करने के लिए हमें उसकी टेस्टिंग करना पड़ती है। तो पहला स्टेप है वो चॉपिंग है, फिर आप वाटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए वाटरिंग से क्या करें सॉफ्ट हो जाए ताकि डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ड्रम्स हैं तो आप देख सकते हैं कि ड्रम्स में आप ओवरनाइट जब पानी डालो तो 4 पाइप से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ड्रम्स अवेलेबल है और ड्रम्स में ओवरनाइट रखो बस कोई डेढ़ घंटे तो ये जल्दी पानी का डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देन जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आप एक जगह जमा कीजिए। जब हमें पायल लगानी है वो स्टार्ट जहाँ पे जिससे जिसको हम कंपोस्टिंग करते हैं उस डे हम क्या बोलते हैं पायल, PIL, ठीक है। तो जब आपने पायल बनानी है, जब आपने स्टार्ट करेंगे कंपोस्टिंग, तो पहली बात है कि आपका फ्लोर जो है जहाँ जिस जगह आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं वो हार्ड होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए। अगर सीमेंटेड नहीं है तो आप देख रहे हैं ये टार्पालिन वगैरह जो या पॉलीथीन शीट्स जो होते हैं बाहर मार्केट में अवेलेबल है, ये डाल सकते हैं ताकि आपकी जो कंपोस्ट में इंग्रेडिएंट्स हैं वो सॉइल के साथ मिक्स ना हो, लीच आउट ना हो जाए न्यूट्रिएंट्स और सॉइल से कंटामिनेशन ना हो जाए। उसके बाद ये पायल है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर लेफ्ट साइड पे इसी जगह ये पहले है कि हम पायल बनाए हैं। जो मैंने आपको टर्निंग का कहा, जैसे पायलिंग का पहला नाम बताना, जैसे यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड पे पायल लेके करने आप देख रहे होंगे कि ये तकरीबन 1 फुट के करीब हमने पायल डाली है और इसके बाद हमने मटेरियल हमने साइड पे जमा किया था वो हमने लेयर के हिसाब से इसमें डाला हुआ है। इसी तरह जब हम दूसरा लेयर डालेंगे वो घास की डालेंगे, उसके बाद फिर लेयर डालेंगे मटेरियल की, उसके बाद फिर घास डालेंगे, उसके बाद फिर मटेरियल डालेंगे, ऐसे ही जितना हमारा मटेरियल है वो यूज हो जाएगा। इसका पर्पस ये होता है जो हम मटेरियल डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, NPK डाल रहे हैं, मोलेसिस डाल रहे हैं, वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने का मतलब ये होता है जितना मटेरियल के साथ मिलेगा उसकी डिकम्पोजिशन जल्दी, उसमें बैक्टीरिया वो जल्दी होगी, उसको डिकम्पोज करेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है यहाँ स्वास्थ्य ये बहुत सिंपल सिस्टम है करने का। 0 डे जो पहला दिन जो हम 0 डे बोलते हैं उसमें हम एक हीप या एक ढेर बनाते हैं घास का और ये सारी चीजें मिलाते हैं जो हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं बनाते हैं, उस दिन को हम बोलते हैं 0 डे। उसके बाद फर्स्ट टर्म होती है हमारे 7 डे पे, सेकंड टर्म होती है 14th डे, थर्ड टर्म होती है 28th डे, 21st डे, फोर्थ 28th डे और
आप देखिए कि 4th टर्न है, इसमें आप इसको 10 से 15 किलोग्राम का जिप्सम जो है ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड नहीं करते हैं। और 5th टर्न जो है 22nd डे को हम करेंगे और थोड़ा जो है हमें हर टर्न पे देखना होता है कि इसमें पानी है नहीं, वो हम हर टर्न पे देखेंगे, इसी टर्न पे नहीं देखेंगे स्पेशली। और जो 5th टर्न है उसके बाद हम लूज छोड़ने के बाद उसको ढेर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उस वक्त में अमोनिया होता है, हम चाहते हैं कि अमोनिया उसमें बनाना जो टॉक्सिक होता है मशरूम के लिए, मशरूम फंगस के लिए, तो वो उड़ जाए, वो निकल जाए, इसलिए हम उसको लूज एक लेयर जैसा बनाते हैं। और फिर हम 35th डे को स्पानिंग करते हैं। ये अगर देखेंगे आप जो पहली 2 टर्न है उसमें जो लैक वाटर वाला वगैरह है, इसके आप ऊपर देख सकते हैं कि लकड़ी का कलर भी है। तो ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि पहली जो 2 टर्न होती है उसमें हम प्रेस करते हैं पायल को, ताकि उसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाए, एनारोबिक डाइजेशन बेहतर हो जाए। हर महीने के बाद उसको चाहे आप जो स्टील के शीट होते हैं, टीन के शीट होते हैं, उनसे प्रेस करें या लकड़ी के शीट से उसको प्रेस करें, ताकि इसमें एनारोबिक कंडीशन ज़्यादा हो और एनारोबिक डिकम्पोजिशन पहली 2 टर्न के लिए हम वहाँ पे वैसे कंडीशन जनरेट करते हैं। और उसके बाद 2 टर्न के बाद हम प्रेसिंग करते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म मेथड और लॉन्ग टर्म मेथड। शॉर्ट टर्म मेथड, ये शॉर्ट टर्म मेथड जो होता है इसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज जो होता है प्री वेडिंग मिक्सिंग ऑफ मटेरियल सारा सेम होता है। तो सेकंड फेज होता है जो भी फेज होते हैं, मॉइस्चराइजेशन होते हैं, स्वेट आउट फेज होते हैं। इसमें हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। इस फेज में हमारे 10 से 12 दिन लगते हैं और इसमें जो है टेंपरेचर रेंज जाता है अबाउट 65 डिग्री तक। और फिर हम लास्ट जो है इसकी कंडीशनिंग करते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 दिन के लिए। ये शॉर्ट टर्म मेथड का कंपोस्टिंग जो है उसका फ्लो चार्ट है। आप यहाँ देखेंगे ये -4 डे है, ये जो ऊपर लिखा है ये -4 डे लिखा है। ये इसलिए लिखा है, पहले हम बताया लॉन्ग टर्म हम कुछ ज्यादा नहीं करते थे, उसमें हम 0 डे पे पानी डालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि ये शॉर्ट टर्म इससे हम उससे 4 दिन पहले चले गए, इनको हमने लिखा -4 डे। -4 डे हम क्या करते हैं, हम सारा स्टेक बना लेते हैं, सारा मटेरियल उसमें बैटिस्ट्रा, चिकन वगैरह डाल देते हैं, लेकिन इसमें यूरिया नहीं डालते हैं। यूरिया हम फिर उसके बाद -2 डे है यहाँ पे हम यूरिया डालते हैं। अगर आप देखिए दोनों में लिखा है एनारोबिक एनारोबिक, दैट मींस यहाँ पे प्रेसिंग ऑफ कंपोस्ट पायल करेंगे पहले को एनारोबिक यहाँ पे लिखा है। फिर जो उसके बाद 0 डे है इसमें हम एनारोबिक कंडीशन यूरिया करते हैं, इसमें यूरिया वगैरह डालते हैं, लेकिन प्रेस नहीं करते। फिर हमारी 3rd टर्न आती है डे 2 को, फिर 4th टर्न आती है डे 4 को, और डे 6 को फिर 5th टर्न आती है। 5th टर्न के बाद जो डे 8 होता है वहां से हमारा जो है पास्चराइजेशन के साइकिल फेज स्टार्ट हो जाता है। साइकिल फेज में जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें एक फ्लोर कमरा होता है, इसमें नीचे से पाइप होती है जिसमें स्टीम आती है, जिस मटेरियल हमने रखा है पाइप रखिए उसको पास्चराइज कर रहा है, उसको डिकम्पोज कर रहा है, पास्चराइज कर रहा है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस को बाहर ले देता है और हमारी पाइप जो है वो पास्चराइज हो जाती है और वो उस कंडीशन में हो जाती है और वो रेडी हो जाती है स्पानिंग के लिए। इसमें हमारे 22 डेज लगते हैं। अब जो हमारा SKUAST का मेथड है, जो हमारा गवर्नमेंट मेथड है, यहाँ किसी यहाँ लोगों के पास तो वो है ही नहीं जहाँ पे हम वो साइकिल फेज करें। इसके लिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट फेज तो सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया डे 4 में ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट जिप्सम, यूरिया जिप्सम मिक्स नहीं होते हैं, और फिर डे 2 पे सेकंड फर्स्ट टर्न होती है, डे 0 पे सेकंड टर्न, डे 2 पे थर्ड, डे 4 पे फोर्थ, डे 6 पे फिफ्थ टर्न होती है, और डे 8 से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पायल है उसके बीच में हम 4 इंच डायमीटर की पाइप डाल देते हैं, एक तो वर्टिकली डाल देते हैं ऊपर तरफ और एक हॉरिजॉन्टली डाल देते हैं, जिससे जो अंदर तक जो गैस बनी होती है वो बाहर आ जाती है। और इसमें जो है अमोनिया इससे में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोवेव प्रोटीन में और पास्चराइज वगैरह भी हो जाती है, और बीच में भी जो है हम इसको 7 टर्न के लिए ओपन कर देते हैं और इसमें जिप्सम ऐड करते हैं।
लॉन्ग टर्म में हम लोग ये डे को करते हैं, यहाँ पे 20 डे को करते हैं, फिर एक इसको टर्न दे रहे हैं 22nd डे को और 23rd डे को हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, ये हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 28 डे लॉन्ग में हम समय करते हैं और 20 डे को हम शॉर्ट टर्म में जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये ग्रीसीनेस जो है कंपोस्ट में उसको रिमूव कर देती है। अच्छा, चाहे 25th डे हो या चाहे 22nd डे हो शॉर्ट टर्म में हमारी कंपोस्ट रेडी हो जाती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारी कंपोस्ट है वो रेडी हो गई? तो जब हम कंपोस्ट को देखेंगे, पहले दिन तो उसका घास होता है और जब 35 डेज होते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, उसमें ग्रीसीनेस नहीं होती है, उसमें एक स्वीट स्मेल हो जाती है जो इनऑफेंसिव होती है और अमोनियल स्मेल नहीं होती है। उसका जो मॉइस्चर 70% रहता है, पीएच का 7.2 से 7.8 रहता है, होना चाहिए। And there should be no visible growth of any other undesirable organisms. कोई भी किस्म की जो कंटामिनेशन वगैरह है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, ग्रीन बोर्ड वगैरह जो है वो सारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पीक पीरियड हुआ होता है तो वो सारी कंटामिनेशन है वो खत्म हो गई है। इसके नाइट्रोजन कंटेंट जो है राउंड में कंपोस्ट 1.75 होता है और शॉर्ट में 2.2% होता है। तो ये this is all about how the compost is prepared and how we can improve the compost nutritionally so that it supports the growth of the mushroom and we get a good yield. This is all for the compost. Thank you very much for this nice lecture. तो किसी को भी कोई समझ नहीं आ गया तो वो कैसे करे? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंपोस्ट तो I will try my best. बताइएगा। बोलिए। देखो जिप्सम का आप पर्पस में है। जिप्सम का जैसे मैंने कहा ये ग्रीसीनेस निकाल देता है, तो हमें ग्रीसीनेस की फोकस खत्म करना है। जब हमें कंपोस्ट को यूज करना है, दैट मींस लास्ट फेज हमें ग्रीसीनेस नहीं करेगी। इससे पहले तो हम क्या करेंगे? जब हम ये यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रीसीनेस निकालनी है, उसके लिए हम उसको जिप्सम का यूज कर रहे हैं। और कोई anybody else? चलो with this चलिए, thank you Dr. Thank you very much. Thank you so much, sir. I hope the participants have been very good practicing. The next lecture we have is on production technology of shiitake mushroom, Lentinula etos. It will be delivered by Dr. Tanveer, appointed as principal scientist in the Department of Plant Ecology in Dr. University of Horticulture and Forestry, Solan, Himachal Pradesh. Being an alumni of Project Wani and law student, sir, it feels honored to have you here. Dr. Tanveer is a highly accomplished person with his expertise in mushroom production technology. And over 23 years of experience in teaching, guiding masters and doctoral students. Dr. Tanveer is the PI of the equipped mushroom in DMR Chambarhat, Solan. He owns over 80 publications with over more than 40 under mushroom research and technology. Sir, we welcome you for the lecture.